As far as Bangladesh is concerned, what we need to understand that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? हिंदी में. तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है. अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं. भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं. जो उनके वहाँ पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है. उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है. आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी. उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है. इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है. जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त. भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. जहाँ तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए. और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं. हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं. हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई है. आपने अगला सवाल पूछा था आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर. तो आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि आर्मी एयर डिफेंस जो है हर लेवल पर है. यानी कि स्पेस से शुरू होता है, वो नीचे हमारा कहना चाहिए 30 से 150 मीटर तक जाता है. क्योंकि आपने देखा जो उनके FPV ड्रोन्स आते हैं, जो आते हैं वो आपके इसी रेंज पे आएंगे, हाइट पे आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लेयर शुरू में हमने छोड़ दी थी, जैसे कि पहले हम Zu-23, L-70, इन सबको हम समझते थे ऑब्सलीट इक्विपमेंट हो गए हैं. हमने इनको अपग्रेड किया था क्योंकि हमारी ज़रूरत थी. आज की तारीख पे उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेड कर रहे हैं. उसी प्रकार से जो हमारे रडार्स थे, जो रडार्स बड़ी चीज़ें देख सकते थे, छोटी चीज़ें नहीं देख सकते थे, उनकी अहमियत तो है. लेकिन जो छोटे क्रॉस सेक्शन के रडार्स देख सकते हैं, जो ड्रोन देख सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई है. इसीलिए जो लास्ट हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था, इसमें हमने LLR काफ़ी खरीदे हैं. क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उनकी नज़र में आते हैं. तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके. तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहाँ से शुरू होती है. उसके अलावा आपको पता है कि QRSAM जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से LRSAM भी कार्रवाई हो रही है. और ये सारी जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल हो जाएंगे. और इस चीज़ को हमारी DRDO देख रही है, जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट है. यानी देखो, उसको एंगेज करो और डिस्ट्रॉय करो, तीनों चीज़ उसमें शामिल होंगी. और इसमें हमने एक हमारे ब्रिगेडियर भी वहाँ पे DRDO में पोस्ट कर दिए गए हैं जो इस चीज़ में पूरी प्लानिंग स्टेज से शामिल हैं, ताकि सुदर्शन चक्र जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो हर जगह पर उसमें आर्मी, एयरफोर्स और समन्वय रहे नेवी के साथ भी. All right, 79, 11 and 12. Good afternoon, sir. I am Shivani Sharma from India Today. Where are you? Sir, this side. She's Okay, Shiva. Sir, we had seen that after Pahalgam attack and prior to Operation Sindoor, there were a number of ceasefire violations along the line of control. After Operation Sindoor, is there a change in the pattern of ceasefire violations and terror launch pads across the line of control? And your insight on the recalibration of forces south of Peer Panjal? So this is Manu Pabi from the Economic Times in the middle, sir. Sir, can you tell us a bit more about your budget priorities? Budget is upcoming. There's a lot of changes which the army has gone through. And what kind of money are you seeking more? And what will the spending priorities be in the coming years, sir? So,
Rahul Singh this side from Hindustan Times. Sir, you talked about the gradual normalization of the situation along the northern borders, but and efforts being made by both sides to kind of keep things calm. And in this context, when China has reiterated again that Shaksgam Valley is a part of their territory, but how do you see these comments in with respect to the situation along the northern borders? Thanks. Okay. So, Shivani ji, you have asked basically about the ceasefire violations. So, let me tell you that in 2025 there were 139 ceasefire violations which took place, but majority of them were basically during the 124, if I can say that specific, but during the Op Sindoor. And the balance one which are there were minor ones. What happens when a new unit comes? By the time, at times, if you have served in, of course, you won't have served in LC, but what I'm saying is, in line of control, when the tree also moves, it looks like that people are coming to attack you. So when the new unit, especially in case of Pakistan, the new unit moves, they are generally at times scared and they carry out a prophylactic firing. In our terms, prophylactic firing will also be looked at as ceasefire violation. So that is the kind of ceasefire violation has taken place. Otherwise, no major ceasefire violation has taken place. The second issue, what you have asked, is recalibration of forces south of Pir Panjal. So as far as forces are concerned, as of today, we are not relenting at all. No forces are coming back because, in my wisdom, today 140 approximately still the terrorists within the hinterland are likely to be there, out of which only 10 could be the local terrorists, rest all could be the Pakistani terrorists. If that be the case, I cannot sit at rest. Therefore, we are not relenting at all, and the forces which were placed there, in addition, those forces are still there, and we will not back down as of today. Manu Papi ji asked the question about the budget. So I would like to just tell you that this time we are hoping for some increase in the budget. Because if Atmanirbharta is the clarion call, then the Indian industry also has to be reassured. That is point number one. The second issue is the budget last year, if you see that capital acquisition, we were given a particular number, but finally we landed up signing somewhere 80,000 crores. And this was LCH itself was approximately 40,000 crore. What it means that as the government is concerned, government has said that if you wish to spend money and you got a scope, don't worry on that. We will get you the money from somewhere. For example, this time also 33,000 has been given out. We may have signed approximately 20 approximately, but we are looking at finally reaching 50. And government is assured, don't worry. As far as we are concerned, we should be able to give it to you. That is the assurance which has been given. Your question is, what are the priorities what we are looking at? So if the priorities, if I have to look at, firstly, I have divided battlefield awareness. Because what I said, force visualization, force application and force preservation. These are the three pillars I always look at. So battlefield awareness will give me the force visualization as well as where to apply and where to preserve. Command and control. So somebody rightly asked, as far as the artificial intelligence is concerned, it's firstly the OODA cycle which is there. It gets enhanced and much faster because of this command and control. So we are paying a major attention to that. Force application I've already told you, and preservation and protection, because now the non-state actors also have today access to a lot of technology which can be used for attack. Therefore, the domain of protection and preservation, which was only, let's say, for the military, now we also look at the civil side. We saw in Poonch that how they targeted our Gurdwara and other places. Therefore, I need to protect and preserve that also. Therefore, I need to spend money towards that side also. And of course, sustenance and support, which is an ongoing factor. It's more applicable to the army because it's a large army, and our revenue expenditure, even for sustaining in terms of ammunition, arms, and the equipment, including kitting, comes from the revenue. Therefore, it will always remain very high for us. So this is as far as your question is concerned. Then Rahul ji, you asked about the Northern Front and about the Shaksgam Valley. So as the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan, China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. And in this terms, MEA has already issued the statement
Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. Right, ladies and gentlemen, we are coming to the probably the last set of questions. So we'll have 63, 68 and 80.